Okay, here we have dy by dx plus p of y is equals to q form is called linear differential equation. So just we have to convert this equation into the standard form. It is if it is not there in the standard form, right? Then this is the working rule. We have to follow this working rule and simplify our problem. Okay, standard form में convert करना, integrating factor find out करना, and then we have to write the solution. This is last step is the solution. Sometimes what happened instead of dy by dx, our equation will be dx by dy form. तो उस टाइम पे क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e power not pdx, it is pdy. The solution will also change. It is not in terms of y, it is in terms of x. एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन, you get the idea what we have to do and how to do it. ठीक है ना? Question number 1. Look at the question is solve x dy by dx plus y is equals to log x. This is the question. Now look at whether our equation is in this form or not. dy by dx plus p of y is equal to q फॉर्म में है क्या देखना है आप पहले स्टेप में, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है क्या है. यस, गिवन x dy by dx, okay, plus y is equals to log x. Is it our equation is in the standard form? हेलो, तुम लोग आंसर ही नहीं देते भाई, यही प्रॉब्लम है. हेलो, जाना तो मैं खुद ही करके खत्म कर दो. dy by dx, I am going to divide this one with x plus y by x is equals to log x divided by x. This can be also written as dy by dx plus 1 by x into y is equals to log x divided by x. This we have to compare with the standard form. The standard form is dy by dx plus p of y is equals to q. Then we can say the value of p is 1 by x, and we can say the value of q is log x divided by x. Then step number 1 is over here. We go for second step, integrating factor. Integrating factor is equals to e power integral pdx, which is equals to e power integral p value is 1 by x here, 1 by x dx. So this is e power 1 by x is log x. Then e and log becomes, as a situation of both आएंगे, e and log together becomes x. So this is only x. Exponential and logarithmic functions are cancelled. Now finally the solution is y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor of dx plus c. Now put these values in. Put the values. Integrating factor is here x. Integral q value is here log x by x. Integrating factor is
into dx, and then we add x and x cancel. Finally, the answer is xy is equal to integration of log x is. कौन है मुस्तफा? क्या कर रहे हैं आप? हेलो हेलो. सॉरी सर, से खुला रह गया माइक. No. अब एक क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म का देखेंगे अपन. रिवर्स फॉर्म में कैसा करते हैं इसको सॉल्व देखिए. एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में से दे रहा. देखिए सेकंड क्वेश्चन है. लुक एट मुस्तफा, जो भी डाउट है पूछ लो अच्छे से. हाँ, सॉल्व. आई डोंट वांट टू कॉल द नेम्स. सबके लिए है क्लास है, बट प्लीज मेक श्योर दिस इज योर क्लास. इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो सर जरा ये सोल्यूशन तो समझाइए ना फर्स्ट वाला. कुछ भी नहीं है. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गॉट इट एज x, तो यहाँ पे रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्लेस पे x. q वैल्यू इज log x by x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज फिर वन मोर x. x and x cancel, log x. Integration of log x, so direct formula x log x minus 1. Then the problem is completed. रिवर्स फॉर्म में एक बार देखो, यहाँ थोड़ा डिटेल में बताओ. पूछे तो बोल सकते हैं, आप पूछ रहे नहीं तो मैं क्या बोलूँ. जीवन x plus y plus 1 into dy by dx is equals to 1. Look at this, multiple terms comes to the denominator, then dy by dx will become 1 by x plus y plus 1, which is an improper fraction. Improper fraction को अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता. dx by dy, if you take the reverse of this, you will get x plus y plus 1. ठीक है ना. अभी भी ये फॉर्म में नहीं आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या रिवर्स फॉर्म में. ठीक है ना. सो वी हैव टू कन्वर्ट स्टिल. क्या करेंगे, प्लस वैल्यू की साइड लेके जाएंगे. दिस इज dx by dy minus x is equals to y plus 1. अब अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके रिवर्स फॉर्म से कंपेयर करें. रिवर्स फॉर्म बोल तो कैसा रहता, ये रहता है dx by dy. जस्ट यहाँ पे जो लिखा है इसका रिवर्स में लिख रहा हूँ मैं, वेरिएबल चेंज करके, प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q. p ऑफ y था, p ऑफ x आता, dy by dx था, dx by dy आता, रिवर्स फॉर्म. So then if you compare, this is your p value, that is minus 1, and then q value is y plus 1, right? Now immediately we have to go for integrating factor. Is equals to e power integral p dx, which is equals to e power integral p value. Where is p here? Minus outside 1 dx, which is equals to e power minus x only. 1 dx is x, e power minus x. ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बट अपने को पी डी एक्स नहीं, सॉरी, वेरिएबल चेंज है ना, तो यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो. देखिए, वेरिएबल अगर चेंज हो गया तो ये पी डी एक्स ये नॉर्मल सोल्यूशन के लिए है, इसका रिवर्स होता पी डी वाई. दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी वैल्यू इज माइनस 1 डी वाई, विच इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया.
अब सोल्यूशन लिख के खत्म कर दीजिए प्रॉब्लम. द सोल्यूशन इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका रिवर्स लिखना, या y है तो x लिखना. रिवर्स कर देना अपन सबको, सबको रिवर्स करना. x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर अपने को बर्नौली में भी काम आता. ठीक है. फिर अपने को ये और काम आता, रिकार्टी में भी काम आता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So x is x only. Integrating factor we got it as e power minus y here. Integral of q value. Q is y plus 1 here. Y plus 1 into e power minus y and then dy. So this is x into e power minus y. फिर इसको बाई पार्ट से कन्वर्ट करके सॉल्व करो. ये फार्मूला आप एक फार्मूला से याद रखें तो इससे ये मिल जाता आपको इसका लिंक. ये फार्मूला एक अलग कलर से बता देता हूँ आपको. इंटीग्रेशन t e पावर t dt is equals to e plus 1 e power 2 e minus 1 e power 2. ये फार्मूला अच्छे से याद रखिए. ये फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो यहाँ पर देखिए टी के प्लेस पे y प्लस 1 है और e पावर माइनस वाई है यहाँ. तो जब आप इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे y प्लस 1 का इंटीग्रेट करके, तो ये आंसर आता y प्लस 2. ये t का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर है, तो ये y प्लस 2. अब बोले तो मैं इसको डिटेल में भी करके बताता हूँ. e पावर माइनस वाई, ये माइनस वाई प्लस 1 e पावर माइनस वाई प्लस सी. ये यहाँ पर खत्म हो गया सर प्रॉब्लम. स्टेप से बताइए ना हाँ, सर. इसको मैं डिटेल में इधर नीचे बता रहा हूँ अलग पेन से. y प्लस 1 ई पावर माइनस वाई को अगर अपन बाई पार्ट से सॉल्व करें, सो लुक एट दिस. बाई पार्ट्स का फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर. फिर से बता रहा हूँ ये स्टेप. बाई पार्ट्स का फार्मूला देखिए. u v dx, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ u इंटीग्रल v dx होल dx. इसमें अगर अपन इसको u उसको v अज्यूम करके अगर सॉल्व करें, लुक एट दिस हाउ इट इज कमिंग. u मतलब y प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता, e पावर माइनस वाई बाई माइनस 1 -1 माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव, इसका ये वाले टर्म का विथ रेस्पेक्ट टू वाई. वाई का 1 हो जाता, कांस्टेंट तो 0 होता, नहीं लिखना. e पावर माइनस वाई बाई माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 है. और ये डी वाई, इसको ये माइनस को बाहर रखे, वाई प्लस 1 ई पावर माइनस वाई, इसको फिर इंटीग्रेट करिए, ये होता माइनस ई पावर माइनस वाई. -y. अगर दोनों में से ई पावर माइनस वाई कॉमन आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये होता माइनस कॉमन लेके, ये माइनस कॉमन लेते देखिए वाई प्लस 1, ये माइनस बाहर चले जाता, तो ये माइनस जाके प्लस Yes. होता, वाई प्लस 2 होता ना. Yes sir. हाँ, वो स्टेप यहाँ पर है. अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिखे तो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज मैं यहाँ कर दिया. वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दिया. ये क्वेश्चन आ रहा थी एग्जाम में, अक्सर आ रहा सेम. +2 कैसा हुआ सर? जी क्या बोले. y+2। तो देखो बाबा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेके ई पावर माइनस वाई को भी कॉमन ले लो, तो क्या बचता अंदर, वाई प्लस 1. ये माइनस बाहर चल गया तो प्लस 1 बचता ना. यस सर। तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 हो जाता ना. वैसा हो रहा हो. यस। मोहम्मद दानिश कौन है. दानिश. सर वो ऐसा डाले थे सर, गलती से एवरी में डल गया.
अरे ये क्या है भाई, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सर, ऐसा उनको गलती से चल गया। ये गर्ल्स भी रहते क्लास में, आपको मालूम है? सॉरी सर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन नाउ। सॉल्व x plus 2y cube into dy by dx is equal to x. So let us solve it. Solution देखिए इसका। फर्स्ट स्टेप में गिवन लिखना है आपको, गिवन x plus 2y cube into dy by dx is equals to x. अब ये मल्टीपल टर्म्स डिनोमिनेटर में चले गया तो व्हाट हैपेंड, dy by dx is equals to x by 2y. देखिए इन लोग की बातों में मैं क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख देता हूँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में यहाँ पर y है, x नहीं है, y है। The now solution is x plus 2y क्यूब, और ये क्यूब सिर्फ y के ऊपर है, लेकिन होल क्यूब नहीं होता, सिर्फ y के ऊपर है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y. Then dy by dx value is equal to y by x plus 2y क्यूब. अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमिनेटर की कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो रिवर्स करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब, डिनोमिनेटर y, denominator is y, and that y we can give to both of the terms. Dx by dy is equal to x by y plus 2y cube by y. This is dx by dy. If you take this term that side, we can also write minus होता है इधर आके, it is 1 by y into x is equal to, यहाँ से क्यूब में से एक टर्म को कैंसिल कर देंगे तो ये 2y. अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, अपना जो रिवर्स फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे. dx by dy plus p of x is equal to q. Then easily we say that p is minus 1 by y and q is 2y square. Next step is we have to go for integrating factor. Integrating factor is equal to e for integral p dy, not x, p dy. This is equal to integral p dy. P value is minus 1 by y dy. This is equal to e power minus 1 by y is log y, which is equal to, again we write it as log y to the power of minus 1. E and log becomes 1. Y power minus 1 is nothing but 1 by y. Finally, we write the solution. The solution is, starting with
इससे कौन सा टर्म x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy and then plus c. So then x into integrating factor is 1 by y we got is equal to integral q value we got it as 2 outside y square integrating factor is 1 by y into dy. एक टर्म स्क्वायर से ये y को कैंसिल कर देना x by y is equal to 2 into integration of y dy. This is x by y is equal to 2 into y का integration y square by 2 plus constant we have to add 2 से 2 कैंसिल जो भी टर्म बच गया वही आपका आंसर है. This is your answer. X by y is equal to y square plus c will be the answer of this question. तो इस तरह से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. और भी क्वेश्चन है और भी करो और एक एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर. देखिए और एक क्वेश्चन देखो from the same topic. The question is solve 1 plus y square dx is equals to tan inverse of y minus x. ओके और यहाँ पर है dy. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dy बाई डी एक्स टर्म होना. ठीक है ना. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर. देखिए dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी एक्स पहले वहाँ पर आना है. तो उसके लिए पहले तो अपना काम करेंगे अपन क्या दोनों को dx से डिवाइड करेंगे. फिर क्या होता है वो देखेंगे. सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली dx dy से डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसा. ओके एक काम करेंगे गिवन लिख के करेंगे अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज अगेन. 1 प्लस वाई स्क्वायर डी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y minus x into dy. Look at that. What I am doing here is I am dividing on both sides with dx. Here, even here also we are dividing with dx because I want to get dy by dx form first of all. बाद में क्या होता है वो देखेंगे बाद में. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. We get 1 plus y square is equals to we are getting here is tan inverse of y minus x, and then along with this we get dy by dx. This multiple terms comes to the denominator 1 plus y square divided by tan inverse of y minus x is equals to dy by dx. But if you see once again we are getting improper fraction. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करना होगा. dx by dy is equals to यहाँ पर भी रिवर्स करेंगे tan इनवर्स ऑफ y माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. मैं दोनों को इधर अप्लाई कर रहा हूँ स्टेप कम करके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. माइनस वाले टर्म को इधर ला के प्लस कर दो dx by dy प्लस 1 by 1 plus y square into x is equal to
tan inverse of y by 1 plus y square. Now look at if you compare with the standard form. This is our standard form. dx by dy plus p of x is equal to q. So easily you can identify this is your q value, this is your p value. P और q identify हो गया, तो immediately integrating factor करें. Integrating factor is equals to e for integral p dy, which is equal to e for integral p dy. P value is 1 by 1 plus y square dy, which is equal to e power 1 by 1 plus y square is directly tan inverse of y. अभी खाली solution लिखना है. The solution is I think we should write the solution in the next page. क्योंकि इसको substitution method से solve करना पड़ता. Next page में लिखता हूँ solution. Y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor of dy plus c. So y into integrating factor we got it as tan inverse of y, e to the power of tan inverse of y is equals to q value is tan inverse of y by 1 plus y square. And then integrating factor is e power tan inverse of y into dy. अब इस टाइप का जो पार्ट आएगा क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें टर्म्स रिपीट हो रहा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए. पुट tan inverse of y is equals to t. दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, 1 by 1 plus y square dy is equal to dt. देन dy की वैल्यू आती है आपको 1 plus y square dt. Then if you put all these values, then what is our final answer? You can see इस साइड तो कुछ भी चेंज करना ही नहीं. tan inverse of y is t e to the power of t by 1 plus y square into e power t. 40 हो गया ना. dy की वैल्यू 1 plus y square into dt. Cancelling these two terms, what's we are getting? T e power t dt. अभी अपन ये फार्मूला यहीं लिखे देखें ये पेज पे. t e power t dt का t minus 1 into e power t, तो लिख दीजिए, खत्म करें. y into e power tan inverse of y will be this side. This is equals to finally here t e power t dt, that is equal to the answer of this is t minus 1 into e power t plus c. This is t value is taken as tan inverse of y minus 1 into e to the power of t is again tan inverse of y and then plus c this side, and y is e power tan inverse of y will be this side. ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका भाई बोल सकते हैं अपन इसको, ये एग्जाम में अक्सर आ रहा, देखो इसको आप लोगों ट्राई कर लो. क्वेश्चन है सॉल्व सॉल्व 1 plus y square into into the plus x minus
e to the power of tan inverse of y into dy by dx is equal to 0, राइट। ये टर्म्स को उधर भिजा देके फिर आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक दो स्टेप बता दोगे तो बता दो, दो स्टेप बता दो इसका। तो ये मल्टीपल टर्म वो साइड भिजा दो, x माइनस e to the power of tan inverse of y into dy by dx, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को वो सेट भिजाए तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक काम करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, e पावर tan इनवर्स ऑफ y माइनस x into dy by dx is equal to minus 1 plus y square. We cancel this minus with this minus. इसके बाद dy by dx को डिवाइड में करे तो ऐसा होता है, dy by dx is equals to 1 plus y square by tan inverse e power tan inverse of y minus x। बट ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, रिवर्स करना पड़ेगा, dx by dy रिवर्स कर दीजिए इसको, रिवर्स करके ये प्रॉब्लम पे जैसा करें ऐसा। इसमें क्या फर्क आ रहा बोलते, खाली उसके साथ ई पावर आता बस, इसके साथ ई पावर tan इनवर्स ऑफ वाई, यहाँ पर भी ई पावर tan इनवर्स। जब इसका सोल्यूशन आप लिखते तो फिर से ई पावर यहाँ पर आता, ई पावर पूरा ई पावर में आता, यहाँ पर ई पावर 2t आता, ई पावर 2t बाई 2 लिख देंगे, खत्म कर देंगे बस। तो ये है आपका टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर मैं कल के क्लास में आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा, फिर रिकार्टी, फिर क्लेरो, फिर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, फिर ये यूनिट खत्म। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। ओके सर। सर ये यूनिट में से कौन से टॉपिक्स में से लेके आने वाले हैं? ज्यादातर बर्नौली में से आता, करना भी। बर्नौली में से, लीनियर में से। सर वो एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। हाँ, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट भी आ रहा। अब दो तीन एक्चुअली अपने को ना 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है ना, तो 5 मार्क्स के 2 यस सर। क्वेश्चन से एग्जैक्ट लीनियर में तो बर्नौली होता, रिकार्टी तो अभी तक आया नहीं कभी भी। क्लेरोड्स 2 मार्क्स में आता, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के साथ सेल्फ ऑर्थोगोनल भी है, वो भी आ सकता है। तो 3-4 टॉपिक हैं समझो जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते, कभी कभी इसमें से डेफिनेशन पूछ, डेफिनेशन, वर्किंग रूल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी पूछते रहते। क्वेश्चन यस थोड़े कराए, आप थोड़े आप लोगों पे प्रैक्टिस करो, फिर कल की क्लास में मैं 4-5 क्वेश्चन बताया आज आपको। अब ये 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो लीनियर क्लियर हुआ है, तो फिर बर्नौली करते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन को लीनियर से सॉल्व करना है, कैसा मालूम होता सर? पहले अपन क्या करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप चाहे तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से भी सॉल्व होता है क्या, चेक करना अपन एग्जैक्ट से, तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही क्या, ऐसा कुछ कंडीशन को चेक भी करके भी कर सकते हो। मतलब वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मल्टीपल मेथड्स, ओके इसे भी सर। सॉल्व, खाली आपको सॉल्व बोल रहा ना भाई, इसे भी करो आपका जी मर्जी। बट क्या है बोले तो थोड़ा स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए, अब ये जैसा ये क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो मैक्सिमम केसेस में ये सेम क्वेश्चन है, देखो कई पेपर में आप देख सकते हैं एक्स प्लस 2 y³ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इतना तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन देख के आप लोग समझ जा सकते हैं कि ये कौन सा मेथड का है, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता इसमें, ज़्यादा ठीक है डिफिकल्ट सर। समझो, आप देख के आप खुद भी समझ जा सकते हैं ये लीनियर है, ये बर्नौली है, ये एग्जैक्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, समझ जा सकते। आपको क्वेश्चन ऐसे ही देता जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ओके ओके सर।